So here we are again to discuss LaTeX typesetting. So in last few lecture we have seen something how to make title, name, and section, then subsection, and a certain mathematical mode typesetting also. Those were only simple things what we have learned in mathematical typesetting. And today we are going to learn something which is called the special symbol and accent. And something we will also start with the what we say that mathematical typesetting. Okay. So here is the chapter number 3 of the book by Lamport. So we will see that something we have seen from this book already, and then rest we will be discussing today. So this is what we have seen, that how to type a simple mathematical expression and all. And you can see here the tech in the math mode when processing. I have told you 3 ways how to type a mathematical expression in inline. Fine. You can use single dollar, or you can use the backslash followed by parenthesis, and close it with the backslash followed by parenthesis. Okay. Then we can also write a begin math and end math. Okay, so these are the 3 ways we can use to type some mathematical expression in the line. So here, if you see here, you can see something, a square bracket, square kind of thing is there. So it shows the spacing between two characters. All right. So how to manage the spacing and all, that I have already told that backslash by colon or semicolon we can use. Sorry, semicolon or simple comma can be also be used for that. Okay. So let us see here the changing in the type style. So this we have seen, I guess, text italic and text IT. We have seen, all right. And then similarly, we have a text BF bold font. Okay. So there are so many things you can see. Text up, it means upright. It will make the text just 90 degree. All right. So मतलब अगर थोड़ा सा भी वो तिरछा रहेगा तो उसको स्लैंट से वो क्या कर देगा, एकदम स्ट्रेट कर देगा. ठीक है ना. किसी भी टेक्स्ट को मान लीजिए आप ऐसा एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, पूरा पैराग्राफ आपने इटैलिक लिख रखा है, उसके अंदर आप इसको अप्लाई करना चाहे तो टेक्स्ट आप लिख सकते हैं किसी एक दो पर्टिकुलर वर्ड्स के लिए. ठीक है. सो मीडियम्स एंड देन टेक्स्ट एससी, तो स्मॉल कैप्स सेव हो जाएगा. तो ये सारी चीजें आप अपने से देख सकते हैं. ठीक है ना. करके दो तीन मैंने बताई थी और अपने से देख सकते हैं इसमें. ठीक है ना. अब जैसे ये है तो इसको भी आप देख सकते हैं. लेट मी शो यू. सो दिस वाज द डॉक्यूमेंट वी हैव प्रिपेयर्ड एंड लेट अस सी. सेक्शन वगैरह भी मैंने आपको बताया था. लेट अस पुट अनदर सेक्शन टुडे. So today's section we are going to type some things, yeah? And then also math mode, and let us write some date. Today's date 02 and 09 and then 2021. Okay, let us see, and then we can run it. Okay, fine. So let me paste it here. The thing I have copied from there. Okay. So actually they are going to be closed in curly braces. Okay. So small caps, something I have written. Let us see what will be the output of this one. Changing style. Okay. Let us see. So let us compile. We will see another section, maybe the next page or what. So we have another section. You can see here. We have another section. Automatically it is created, and what we have written within that section, this is coming. This is displayed here. All right. And then small caps. So you can see the style, the way it is written here. Fine. Okay. So we have here another subsection was there. Then here subsection was there, and then there was section special. You can see that this is coming in between center, in the centered
in the line. Okay, all sections are coming centered in the line, you see, with numbers, and then subsection is justified towards left. Fine. So here also this section is coming in between the line and something we have written here. Okay, so let us see. So I guess you can do all these things, or simply if I copy everything from here and paste, you can see the effect. But thing is that every square break, every curly braces have been changed here to parenthesis, so that need to be changed. Okay, text IT, let me remove this one. We have already seen. And then slanted, we can keep this one with within the curly braces, and then here also, and then here also. Fine. Okay, let us see what is there. And then bold face also we can. Okay, let us. If I want Roman or something, then I can. And this is text sans serif family. Let us see. Okay, text SF. Text SF is there, and then after text SF, we can put curly braces. Okay, you can type it, and just to save the time, I am just copy it this one. Okay, all right, and then we can run it. We can run it and see. You can see that everything is coming. Okay, this was the first expression we have kept here, and then this is upright shape, then slanted, then small caps. Of course, this one the same, and then medium series, and then bold face, and then Roman. This is a Roman font, and this is a sans serif family, and this is typewriter family. So locally we can change anywhere. Fine. We can locally change it anywhere where we want. So I guess it is clear to you. Wherever you want, you can change it. Later I will tell how to change the color also. So that is another thing. Okay. So multiple thing also one can write. You can see that this is a sentence. Okay. So here this is bold, and this is italic, and this is a bold face. So something you can see. Okay. So in a line you can change the style also. So this is the declaration kind of thing, that text up and then text IT, italic shape and all. So so this is sufficient what we have seen here. This is sufficient for this. And then symbol from other language. And in other language, there we see already in many cases accent. Suppose we want to write in German or French or something. So if there is name something in some name from Russia or Poland or Germany, so we used to see something like this. You can see, okay. Some O is there, then above this dash is there, or dot, single dot is there, or double dot is there. You can see it also. Fine. So how to write that one? Okay. So for this, we need to use accents. Okay. And then we have another symbol kind of thing. Fine. So these are the symbols, and these are the accents. Okay. Let us see. For this, you can see these are the commands. Suppose I want to produce some this kind of expression, so I need to type this one. Okay. If I want to use, I want to display this kind of expression, then I need to type this one. If I want this one, then if I need this one, then we need to type this one. Okay. So if I need a double dot on above O or some symbol or some letter, then we need to type like this. Okay. So let us see one by one. So these accents are important when we are using some symbol or some name from other languages also. Okay.
So you can see, let us see, okay, ascends. Let us make another subsection. Subsection is there, and then let us write here ascends. So we have created a subsection. Suppose I want double dot over O. Okay, so let us see if it is producing. Let us close it in curly braces. If it is single character, then we need not to write curly brace. Okay, but I have written anyway. Let us see. So we are going to get another subsection here below this one. Okay, you see this one, and we have like this symbol like this. Okay, so similarly, other will also we can write. We have used this one. We can use this one. If I want cap, then I need to type like this. Okay. So also here you see dash and all, everything is there. Let us see if I can copy this one. Let us try this one. Okay. So let us make another new line and then copy. But if I am copying that one, it is not going to exactly what we have seen there. Okay. So here ELSE. ELSE is there, and then what we need CN. Uh, there is a tilde over some line over N. Okay, for that they are using this kind of thing, and this symbol is on keyboard of your computer or laptop, or you can the same thing you can also find on mobile also. In laptop, you can just go to just below escape key. Okay, just below escape key is ESC. Okay, in the left top corner, and then just below that you can see. So I'm using that one. Let us see what is there. Okay, backslash, then backslash. I need to copy this one, backslash. Not here. Here. Okay. Let me delete this one. Type from here. NOR is there, and then NOR is there. Okay, fine. And then I need to write that one. So backslash is there, and then this symbol is there. So let us see what is output of this. If it is going to give something. Okay. So here we have the output. Okay. So here we have output. You can see there is a tilde kind of thing on above N. Fine. And then suppose he want some dash over A. So ista. Let us see. So give space ESTA, and then I want some dash over it. So let us write backslash and then followed by the dash. So you can see the output here. Okay. So we are getting everything accordingly. And then double dot I already told to you. Fine. And then this is another thing. This is there is no some special character. So garcon is there. So let us see what is there, how we can write it. Okay. So GAR, let us write GARCON, and then we have some symbol just below C, and this is produced by backslash C. So let us write before this backslash and then C. But if you write, oh, we write like this, then this will take as a command, because in LaTeX कोई भी command backslash से start होती है. Fine. So it will take it as single
single command. So we need to give some space here, okay, or else we can keep this one like this and then here, okay. So this will make why this? Is there anything? Something. Okay, I did mistake. Here should be C. Then this I should remember. Okay. So this will produce the effect on this only. Okay, and this will be treated as only single command. Otherwise, it will it will have taken \CCC as command. Now it is taking only \C as command. Okay, so you can see this has also come. Fine, and the rest thing you can see and practice and remember some symbol also. So everything what you are given here, you want single dot, you can write like this. You want double dot, you can write like this. And then you want like this, then you use \T and then O के ऊपर चाहिए तो यहाँ करली ब्रेसेस में उसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना. डबल डैश चाहिए तो \H लिखिए, ठीक है. डबल डैश चाहिए तो \H लिखिए. सपोज इसी में हम चाह रहे हैं तो \H हो गया. और जिसके ऊपर भी हम चाह रहे हैं, सपोज हम O के ऊपर चाह रहे हैं, उसको हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है. So after compiling this, we will see. Okay. So here double dash has come over O. Fine. So other mathematical symbols, they are from non-English. So you can also use like this. Okay. You want something over here, over a circle. So we can write like this. We can write like this. Okay. So let's do this also. Okay. So \, and then let us write like AA, and then what we need this one in output, so it will automatically produce this symbol, because by means of this symbol they have stored in library that when I'm going to type this, and then they are going to produce this notation. Okay. So let us see if it requires some package or what, or it is going to give directly. Okay, so no need to include extra package. Already this notation is coming, this non-English symbol is coming. Okay, fine. So I guess everything is clear until now. Fine. So copyright, अगर आपको ये सिंबल चाहिए तो टाइप कीजिए \copyright, ठीक है ना. पाउंड चाहिए तो ऐसे टाइप कीजिए आप, ये सिंबल चाहिए तो ऐसे टाइप कीजिए, और ये वाले सिंबल्स आप जानते हैं तो \P टाइप कर सकते हैं, ठीक है. फाइन. ओके. हेलो. यस सर. ओके. सो ये चीजें हैं, आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा आपको, ठीक है ना. हेलो, प्लीज. Are you speaking something content about content or what? सर पूछ रहा था कि सर इसका प्रैक्टिस कहाँ करेंगे सर, वो कोई क्वेश्चन रहेगा सर ये इसमें No, ये सब करना होगा. practice when I mean practice, then you can see this one and you can make a document, your own document, just like I have made in Overleaf, and then you can try it. Or of course I'm going to give some assignment for typesetting, so in that also you can practice. Right? इसमें टाइपिंग की प्रैक्टिस है. Okay, so I will give you something as an assignment, ठीक है. And then we come towards mathematical formula. So mathematical formula में मैंने आप लोगों को कुछ बताया था पहले कि जो है इनलाइन जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं उनको हम कैसे टाइप कर सकते हैं. तो उसके लिए मैंने पैरेंथेसिस बताया था, देन डॉलर बताया, सिंगल डॉलर बताया था, ठीक है, और बिगिन और एंड मैथ बताया था, 3 जो इन टेक्स्ट फार्मूला देते हैं, ठीक है ना. मतलब आप लाइन लिख रहे हैं और उसके साथ ही आएगा वो इसी लाइन में, जैसे ये लाइन लिख रहे हैं ना, इसी में
मैथमेटिकल फार्मूला आ जाएगा। बहुत सारे आपको दिखेंगे, आपको पहले भी दिखे, जैसे ये है, इसमें लिख रहे हैं यहाँ पे आप ए स्क्वायर आ जाए, बी स्क्वायर आ जाए, अल्फा बीटा गामा आ जाए, जैसे ये लिखा हुआ है ना, ऐसे आ जाए। तो इनके 3 तरीके मैंने बताए थे आपको कि आप कैसे उसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बिगिन और एंड मैथ करके कर सकते हैं, इसका यूज करके कर सकते हैं। ये जब यूज करेंगे बैक स्लैश और एक डबल डॉलर, दो ही, तो उससे जब आप करेंगे ना तो प्रोड्यूस करेगा आपको नई लाइन में फार्मूला। वो चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ आपको। let me show where we have done this one. Okay, so यहाँ पे आप लोगों को somewhere यहाँ पे देखिए, आपको मैथ मोड मैंने बताया था पहले, ठीक है ना। तो ये इन लाइन के लिए मैंने बताया था, ठीक है ना, ये इन लाइन होता है, लाइन में फ्लोटिंग में। और यहाँ पे मैंने बताया था बीच में कब आएगा, और इसके लिए आपको डबल डॉलर बताया था, स्क्वायर ब्रैकेट करके बताया था, बिगिन इक्वेशन एंड इक्वेशन बताया था, ठीक है ना। और इक्वेशन स्टार बताया था, अगर आप इक्वेशन लिखते हैं तो इक्वेशन नंबर प्रोड्यूस होगा, अगर स्टार लिखते हैं तो फिर वहाँ पे इक्वेशन नंबर प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब ये और ये दोनों एक ही जैसे, ये दोनों एक ही जैसे ही काम करेंगे, ठीक है। सो ये चीज़ें हम लोगों ने देखी है पहले से ही, फाइन। अब आते हैं हम सबस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट। अच्छा, पावर मैंने बताया था पहले, ठीक है ना। फ्रैक्शन अभी बताना बाकी रह गया। तो लेट अस सी, एक एक करके देखते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में, ठीक है ना। सो लेट अस राइट पावर को, पावर हम कैसे वो करेंगे। तो पावर हम करने के लिए, चाहे आप जिसमें भी करिए, चाहे आप इन लाइन कीजिए या फिर आप नई लाइन में डबल डॉलर के साथ करिए, ठीक है ना। एक ही तरीका है उसका। x की पावर मान लीजिए 2021 लिखना है, तो आप करली ब्रेसिस में 2021 लिखेंगे, एक्सपोनेंशिएशन है, ठीक है ना। पावर और ठीक है ना। तो इसको एक तरीके से आप ऐसे कर पाएंगे, ठीक है ना। ये तो पता है आपको, ठीक है ना। एंड देन सब स्क्रिप्ट करने के लिए आप मान लीजिए A12 लिखना है या IJ लिखना है, तो IJ ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, अंडरस्कोर करके, ठीक है ना। अगर यहाँ पे सिंगल रहता है तो फिर करली ब्रेसेस की जरूरत नहीं है। अगर सिंगल ये कैरेक्टर नहीं रहता तो आपको करली ब्रेसेस के अंदर इसको रखना पड़ेगा, ठीक है ना। फाइन, ओके। एंड देन सुपर स्क्रिप्ट, लेट अस सी। सुपर स्क्रिप्ट में आप एक्सपोनेंशिएशन जैसे वो कर रहे थे, वो था, चाहे सुपर स्क्रिप्ट का ये एक्सपोनेंशिएशन का ये, ठीक है ना। यहाँ पे आप करेंगे तो ए अंडरस्कोर, अब मान लीजिए इस दोनों यूज करना है, आई जे यूज करना है, एंड देन इसके ऊपर पावर हमें चाहिए कि 2021 आ जाए, ठीक है ना। सो 2021 हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना। तो ये सुपर स्क्रिप्ट है, ये सब स्क्रिप्ट और पावर एक्सपोनेंशिएशन, ये सारी चीजें यहाँ पे। लेट अस सी द आउटपुट। ये देख रहे हैं आप आउटपुट, ठीक है। ये एक्सपोनेंशिएशन था 2021, यहाँ पे आ गया था, यहाँ पे भी ये इतना आ रहा है, यहाँ पे दोनों का मिक्सचर है, ठीक है ना। सुपर स्क्रिप्ट भी है और सब स्क्रिप्ट भी है, ठीक है, फाइन, ओके। एंड लेट अस सी मोर थिंग नाउ, फ्रैक्शन, लेट अस टॉक अबाउट द फ्रैक्शन। हम फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, A/B, ठीक है ना। सो फ्रैक्शन के लिए फ्रैक्शन दो तरीके से हो सकता है। हम हो सकता है ऐसे लिखें, रनिंग में लिखना हो, अगर हमें एक लाइन में, इन लाइन में लिखना हो, तो ALPHA अल्फा हो गया, और बाई ये हो गया बैक स्लैश बीटा कर दिया हमने, ठीक है ना, ओके। और इसके अलावा अगर मान लीजिए हमें नई लाइन में लिखना है, ठीक है ना, नई लाइन में लिखना है तो हम चाहे डबल डॉलर में करके लिखें या फिर स्क्वायर ब्रैकेट, उसके लिए बैक स्लैश प्रोसीड करेगा पहले। सो इसमें देखते हैं, अगर हमें लिखना है नई लाइन में तो हम ऐसे लिखेंगे FRAC फ्रैक,
एंड देन कर्ली ब्रेसेस। अब इसमें जो लिखेंगे पहले कर्ली ब्रेस में, ये हमारा न्यूमरेटर होगा, दिस विल गिव अस न्यूमरेटर। So numerator, suppose we are trying to write something a to the power something 5 and then plus something you can write suppose b plus backslash alpha alpha. Okay, suppose we have this one in the numerator, and then in the denominator we have something suppose the a mma and plus suppose we have beta. Okay, and minus suppose we have 5, something like this we have to write. Okay, so this will produce something formula kind a by b type formula expression. Okay, you see the fraction, this is inline expression, we need to write a by not backslash, this is forward slash. Okay, just a minute. I am downloading. You see, okay, so this is a by b alpha by beta, and this is a this kind of expression. Okay, so frac we need to write backslash frac, and then what is else you can write like this also, अगर हमें ऐसे लिखना है, ठीक है ना। तो इन्होंने देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट में करके लिखा हुआ। अगर यहाँ पे हमें z/2 लिखना है और उसको हम नहीं चाह रहे कि z/2 बन के आए, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको भी देख सकते हैं। तो मतलब ये नहीं है फ्रैक के अंदर हम ये वाला जैसे मैंने बताया था ये सिंबल इसका नहीं यूज कर सकते, इसका भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, एंड देन रूट की बात की जा रही है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग। ओके, सो लेट अस राइट, एंड देन we have we have square root, then इसको हम लिखेंगे backslash sqrt, this is a command for this one, and then in curly braces we can write whatever or whatever symbol or number we want. Okay, so square root of 23, fine. Okay, so ये स्क्वायर रूट ऐसे बताएगा कि मतलब स्क्वायर रूट बताएगा, बट nth रूट अगर लेना हो तो उसके लिए हम जो है इसी में सपोज मैं इसी में अगर दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक साथ है ना, तो इसी में कॉमा लगा करके या जैसे भी आप लिख सकते हैं उसमें, उसके लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है कि अलग से फिर से डॉलर लगाओ। SQRT हुआ, ठीक है ना। मान लीजिए हम 2021 का चाह रहे हैं, और कौन सा रूट चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं सपोज 5th रूट चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो लेट अस सी, लाइक दिस इज nth रूट इन जनरल के लिए अगर हमें ये टाइप करना हो, ठीक है ना, तो वैसे होगा। यहाँ पे हम देखेंगे इस रनिंग। ओके, लेट अस सी, आउटपुट हैज कम। सो आप यहाँ पे देखें सिंपल स्क्वायर रूट आ गया, यहाँ पे 5th रूट आया है, ठीक है। अब नई लाइन करने के लिए आप जानते हैं डबल डॉलर या स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं या बिगिन इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। सो ये क्लियर हो गया आपको कि कैसे लिखना है। हाँ, अब यहाँ पे जैसे आपको चाहिए कि नहीं कोई सिंबल चाहिए तो सिंबल भी लिख सकते हैं, सिंबल आप चाहिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। SQRT व्हाट एवर यू फील लाइक, आपको x माइनस वाई का चाहिए, x माइनस वाई प्लस 5 का चाहिए तो आप लिखिए, यहाँ पे कोई बात नहीं, x माइनस वाई प्लस 5। और जो सा रूट चाहिए, अगर ट्रू लिखना है तो फिर यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर कुछ और लिखना है तो आप लिख सकते हैं, अगर nth रूट लिखना है तो भी आप यहाँ n टाइप कर सकते हैं, फाइन। ये देखिए आप, ठीक है, ऐसे कर। सो यहाँ पे स्क्वायर रूट भी आ गया है ना। ओके, सो अब यहाँ पे हम देखते हैं इलिप्सिस, ठीक है। इलिप्सिस देखते हैं, इलिप्सिस मतलब जो 3 डॉट्स आप कई बार देखते होंगे, ठीक है ना, तो वो चीज हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। इलिप्सिस 2 तरीके के होंगे, एक तो सेंटर में डॉट 3 डॉट्स आएगा, एक बॉटम पे आएगा, जैसे ये है ये लॉ इलिप्सिस, तो यहाँ पे बॉटम पे आ रहा है, ठीक ना। लेकिन जब हम प्लस करके ऐसे लिखे ना सेंटर्ड इलिप्सिस, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 3 डॉट्स जो है बीच में आएंगे, इन दोनों सिंबल के बीच में आते हैं। देखिए बीच में आ रहा है, यहाँ पे बॉटम पे आ रहा है, ठीक है ना।
ओके, सो ये दोनों चीज़ें वहाँ पे प्रोड्यूस करने वाली हैं आपको डिजायर्ड रिजल्ट। डिजायर्ड रिजल्ट में अब देखिए, अगर मैं इसको पेस्ट करूँगा तो भी कोई बात नहीं। लेट मी सी व्हाट वाज देयर, एक्स अंडरस्कोर करके उन्होंने लिखा। सीक्वेंस वगैरह में एक्चुअल में हम लिखते हैं, ठीक है ना। सो एक्स है, जैसे अंडरस्कोर 1 लिख रहे हैं, ठीक है ना। एंड देन सेकंड है एक्स अंडरस्कोर 2। तो अंडरस्कोर क्या करेगा आपका, ये प्रोड्यूस करेगा सफिक्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, x1 के बाद फिर कॉमा, फिर उसके बाद xn तक है, तो हम और टाइप कर सकते हैं x1 x2 हो गया, ठीक है ना, कॉमा लगा दिया हमने। फिर हमें इलिप्सिस हम यूज करेंगे, एल डॉट यूज करेंगे, ठीक है, और एल डॉट यूज करेंगे, फिर लास्ट में जा करके यहाँ पे हम अंडरस्कोर n लिख देते, मतलब n तक ये जाने वाला है, ठीक है। सो ये ऐसे हो गया, फाइन। एंड देन सेंटर्ड इलिप्सिस, हमें जब मान लीजिए सम करना है, 1 हो गया प्लस 2 हो गया प्लस 3 हो गया, ठीक है ना, एंड प्लस हो गया। अब यहाँ पे जो है हम सी डॉट्स लिख देते हैं, और सपोज हमको ये ऐड करना है, 100 तक ऐड करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें अगर लिखना है तो सो हमने इसको इस तरीके से कर, लेट अस सी। So at one place we will be having dots in the center, and another place we will be having dot in the bottom. So that we can see. Of course नई लाइन में हम इसको लिख सकते हैं बैकस्लैश करके। So आप ये देखिए, यहाँ पे बॉटम पे आ रहा है इसमें, ठीक है ना, और यहाँ पे सेंटर में आ रहा है, फाइन। So ये इलिप्सिस भी आपका यहाँ पे आई गेस समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इलिप्सिस यहाँ पे मैं नई लाइन कर देता हूँ। So ओके, लेट अस सी मोर थिंग। अब यहाँ पे ऐसा प्लस नहीं है, आप कोई भी आप यहाँ पे सिंबल यूज करेंगे, मतलब ऑपरेटर माइनस यूज की, जो भी यूज कीजिए, तो सारी चीज़ों के लिए हमें वही लगाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। सी डॉट से ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं दो और डॉट्स आते हैं, एक तो आता है वी डॉट्स आता है, एक डॉट आता है डी, डायगोनल डॉट आता है। एक वर्टिकल डॉट्स होते हैं, डायगोनल। यूजुअली दे आर यूज्ड when we are constructing or we are typing, we want to display some matrix kind of thing, okay। तो वहाँ पे आता है कि बड़ी मैट्रिक्स है, हम सारा टाइप नहीं करना चाह रहे हैं, और फिर हम डॉट 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 ऐसे करके यूजुअली लिखते हैं, तो वो हम देखेंगे जब मैट्रिक्स में होगा। लेकिन ये है, ये डॉट और ये डॉट भी यूज होगा, तो इसके लिए हम देखेंगे दो और यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है ना। ये इलिप्सिस हो गया हमारा, हो गया एक इलिप्सिस, ये हो गया, ठीक है ना। तीसरा देखते हैं हम, तीसरे के लिए हम करेंगे, ये सारे के सारे आपके आएंगे मैथ मोड में ही, ठीक है ना, बैकस्लैश और ये डी डॉट्स हो जाएगा, ठीक है, डायगोनल डॉट्स और वो डॉट्स। तो जहां भी हमें जैसे यूज करना है, पहले हमें पता रहेगा तो हम यूज कर लेंगे उन सबका, ठीक है। सो लेट अस सी, ओके, सो हियर वी हैव 3 वर्टिकल डॉट्स एंड डायगोनल डॉट्स, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, कि 4 तरीके के इलिप्सिस हमने यहाँ पे देखे हैं, ठीक है ना। एंड देन वी हैव मैथमेटिकल सिंबल्स एंड ऑल। सो अल्फा बीटा गामा ये सारी चीजें बता ही चुका हूँ मैं आपको, ठीक है ना। अल्फा है, बीटा है, गामा, ये सब टाइप करके। अब इसमें से और भी प्री सिंबल्स होते हैं बहुत सारे, लोअर केस में होते हैं, अपर केस में होते हैं ना, ठीक ना। अब जैसे लैम्डा होता है, लैम्डा ये अपर लैम्ड वो है, ये छोटा वाला लैम्डा है, ठीक ना, लोअर केस और अपर केस वाला। तो आपको कोई भी अगर वर्ब मान लीजिए ये यूज करना है, ठीक है ना, अगर पाई अगर चाहिए तो ये से होगा, अगर पाई चाहिए तो बैकस्लैश पाई टाइप कीजिए, ठीक है। अगर सिग्मा चाहिए, स्मॉल सिग्मा, तो आप ये टाइप कीजिए, बैकस्लैश सिग्मा टाइप कीजिए, ठीक है ना। और पाई प्रोडक्ट वाला बड़ा पाई चाहिए तो आपको ये वाला टाइप करना पड़ेगा। बिग थीटा चाहिए तो आपको बैकस्लैश यहाँ पे कैपिटल टी पहले आ जाएगा। आप देखेंगे ये आपको पता हो जाए, फिर इसके हिसाब से इसको भी कर सकते हैं। गामा स्मॉल वाला है ये, ठीक है ना, और इसमें बड़ा वाला गामा चाहिए तो जी कैपिटल कर देंगे आप, फाइन। तो इसको मुझे अलग से टाइप करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आई गेस। हेलो, यस सर। यस सर, ठीक है, ये कर लेंगे आप, ओके। एंड देन वी हैव कैलियोग्राफिक लेटर्स। कैलियोग्राफिक लेटर्स आप जानते हो, जैसे आप लिखते थे ना अपनी नोटबुक में, इटैलिक कुछ इस तरीके से करके लिखने के लिए, तो उसके लिए हम और
ये चीजें यूज होती हैं सिंबल्स के लिए ना, ठीक है, सिंबल्स के लिए। जैसे ए को हम नॉर्मल ए नहीं रखना चाह रहे हैं, हम ऐसा चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ आए, थोड़ा स्टाइल में आए, ठीक है ना। तो हम उसके लिए और यूज करते हैं, जो कमांड यूज करते हैं, जैसे एक मैथकल कमांड है, ठीक है ना। तो मैथकल एफ को ऐसे बना देगा, ठीक है ना। देखिए आप इसमें ये कैलिग्राफिक लेटर्स जो है, just a minute. So let us see ग्राफिक लेटर्स, ठीक है। और मुझे सिंबल एक्चुअली वो सिंबल के फॉर्म में आते हैं, तो मैं एक मैथ कल लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये मैं ऐसे यहाँ पे लिख दूंगा, जैसे मान लीजिए एफ मुझे प्रोड्यूस करना है, तो मैं ऐसे लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसके अलावा भी और होते हैं, वो भी बताता हूँ। मतलब जो भी चाहिए, जिस लेटर का चाहिए कैलिग्राफी, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो वहां से प्रोड्यूस कर देगा। इसके अलावा भी और सिंबल और नोटेशंस होते हैं कैलिग्राफी, ये जो मैथकल के अलावा, ठीक है। तो ये एफ देखो स्टाइल से लिख करके आ रहा है, जैसे आप लोग लिखते थे वहाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी आप लेटर टाइप करेंगे ना, तो दिखेगा आपको, ठीक है। Fine. So let us see something. Okay. So they are telling about only one thing, but there are so many things also. You can see, अगर आपको दूसरे भी और सिंबल्स होते हैं, जैसे कई बार होता है ना, जैसे आर और वो लिखते थे, तो मान लीजिए हम उसमें फॉर एग्जांपल हम ग्रुप थियरी में, ठीक है ना, ग्रुप थियरी में हम लिख रहे थे कि आर को दूसरे तरीके से लिखते हैं ना, स्क्रिप्ट करके आता है, डबल लाइन करके आता है। तो रियल नंबर का ऐसे लिख दिया मैंने। लेट अस सी इफ इट इज वर्किंग। अनडिफाइंड और मैथ बेबी, ओके, 1 t is extra, I think. Okay. So it is auto compiling, you can see here, but I will show you. Okay. So let us see another mthbb. Okay, so there are so many things in symbols, you can try it out, आपको बुक में मिलेगा, ठीक है। मैथ पे भी सपोज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का चाह रहे हैं, तो उसको भी अलग से लिखते हैं, सी लिखते हैं, बीच में वर्टिकल लाइन रहती है, ठीक है ना। तो ये दो के दोनों अभी दिखेंगे आपको यहाँ पे, लेट अस सी, यू सी, ठीक है ना। तो ये हमने मैथ बीबी लिखा हुआ है, उसके बाद कर आपने जो है फिर उसमें लेटर बस करली ब्रेसेस में पुट कर दिया, बाकी ठीक है। तो ये प्रोड्यूस हो रहा है, और यहाँ से ये प्रोड्यूस हो रहा है, फाइन। So in this way we can also write the symbols and all. और मैनेजिंग ये जो होता है मैथमेटिकल सिंबल्स जो होता है आपका इन लाइन में, ठीक है ना, इन सब चीज़ों का। तो ये कह रहा है टेक कैन मेक डोजन ऑफ स्पेशल मैथमेटिकल सिंबल, अ फ्यू ऑफ देम सच एज, ये तो प्रोड्यूस बाय टाइपिंग डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा भी हमें और सिंबल चाहिए होता है, तो जैसे डिवीजन का बता दिया, फ्रैक्शन का बता दिया, उसका तो हो गया, हम जान रहे हैं, ठीक है ना। स्पेशल कैरेक्टर्स भी बता दी, एन कैसे प्रोड्यूस करना है, तो लास्ट क्लास में मैंने दिया था बैकस्लैश करके, ठीक है ना। और बाकी के जो सिंबल्स मैथ मोड में प्रोड्यूस करने होते हैं वो यहाँ पे दिए, अगर प्लस माइनस प्रोड्यूस करना है तो आप, और ये सारे के सारे मैथ मोड में ही चलेंगे, ठीक है ना। अगर सर्कल चाहिए तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। स्टार चाहिए तो बैकस्लैश स्टार टाइप कीजिए, ठीक है ना। और बैकस्लैश AST से इसमें देखिए 5 वो आता है, इसमें जो है 3 3 6 आता है, ठीक है ना। AST से स्टार से 5 आएगा केवल, ठीक है ना। डिवीजन बैकस्लैश DIV से ये प्रोड्यूस होगा। अगर क्रॉस चाहिए टाइम्स, जैसे A टाइम्स B, तो आपको बैकस्लैश टाइम्स लिखा। प्लस माइनस से बैकस्लैश PM, और माइनस प्लस चाहिए तो बैकस्लैश MP, फाइन। डायमंड शेप चाहिए तो आप बैकस्लैश डायमंड टाइप कर सकते हैं। कप और कप कैप हो गया, ये कप हो गया, यूनियन वगैरह के लिए इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और स्क्वायर कप ऐसे यूज कर सकते हैं, डॉट ओ डॉट ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। सेट माइनस ऐसे ही लिख सकते हैं, फाइन।
तो ये सारे इसके एक तरीके से चीट सीट जैसा है कि आप यहाँ से कमांड देखिए और फिर वहाँ पे ट्राई कीजिए, ठीक है। बहुत सारे सिंबल्स है, देखिए लेस देन और इक्वल्स टू, ब्रेक है ये सबऑर्डिनेशन का, सिमिलर होने के लिए ऐसे चाहिए, ठीक है, फाइन, ओके। So a few we can try it out here. Just a minute. It is hanged or what? Okay. So a few things we can try it out. Let us see. So let us go in new line. Suppose I want to backslash ALPHA alpha and plus minus gamma backslash PM. Okay. And then backslash GAMMA, fine. So alpha plus B minus gamma. Suppose I want to write this is a greater than, so greater than or equals to, suppose I'm writing backslash beta, okay, fine. And then I need to produce n, so backslash n, everything, so many things I'm writing here, okay. And then I want to produce cup here, so let us write A, and then CUP backslash cup and then B. I'm writing it to write union of A and B. Okay. So let us write some more thing. Suppose I want what are more symbols? So many symbols. Let's okay. Let us write 3 is greater than 2. Okay. This can also be written as let us write X less than or equals to LEQ, then Y, and so many things we can write like this, okay. And let us write one more thing, that X belongs to, for belongs to we write in, okay, which set A, so this will produce X in A, okay. Something, let us again compile it. Okay, so many things has come, you see, without a space I have written, so some space need to be given here. So alpha plus minus gamma, then greater than beta, then n symbol A union B, 3 is greater than 1, X is less than or equals to Y, and X belongs to the set A, fine, okay. और यही नहीं, आप अगर ये चाह रहे हो ना कि सर मैं इसको चाह रहा हूँ कि ये ऐसा कुछ रहे, मैथकल टाइप का ऐसे आए, तो आप यहाँ भी इसको भी ऐसे लिख सकते हो, मैथ, ठीक ना, कल चाहिए या बी चाहिए, जो भी आप फील करें, ठीक है ना। अगर आपको कल आपको मैथ बी चाहिए स्क्रिप्टेड, तो आप ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या, तो आप एक जगह आप प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको, ऐसे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। लेट अस सी व्हाट इज देयर। आप देखिए इस तरीके से आगे, अब इसमें प्रॉपर स्पेसिंग आप देना चाह रहे हैं तो उसको भी आप मैनेज कर सकते हैं। लेट अस डू समथिंग, जैसे ही आपने यहाँ पे टाइप किया तो ये पास में आ रहे हैं, तो बैक स्लैश आप सेमी कॉलन यूज कर दीजिए, ठीक ना। फिर ये क्या आ गया, ग्रेटर नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ नहीं चाहिए हमें, ये पूरा एक एक्सप्रेशन हो गया। सपोज इसके बाद हमें इनके बीच में थोड़ा स्पेस चाहिए, तो यहाँ पे बैक स्लैश ऐसे कर दिया, ठीक ना। एन के बाद हमें थोड़ा स्पेस चाहिए तो ऐसे कर दिया। ये ए यूनियन बी इसके लिए तो चाहिए नहीं, यहाँ पे हमें चाहिए तो ऐसे कर दिया, ठीक है ना। और अगर स्पेस चाहिए तो आप डबल ऐसे 2-3 बार कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर ज्यादा स्पेस और चाहिए तो बैक स्लैश QUAD कर सकते हैं, क्वाड, ये भी आता है, ठीक है ना। ओके, तो ये सारी चीजें बता रहा हूँ मैं आपको हॉरिजॉन्टल स्पेस यहाँ पे प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। और ठीक ना, और एक ये भी होता है, इससे और भी कम स्पेस प्रोड्यूस होगा, ठीक ना। इससे सबसे ज्यादा होगा, इससे उससे कम होगा थोड़ा, इससे उससे कम होगा थोड़ा, ठीक है ना, फाइन। और इससे जो है जितना ये प्रोड्यूस करेगा उसका 3 गुना प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये है अगेन कंपाइल दिस, आप देख रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे हमने नहीं दिया था, थोड़ा स्पेस दिया था, ठीक ना। यहाँ पे हमने ज्यादा दे दिया, ठीक ना। यहाँ पे हमने क्वाड लिख दिया था, यहाँ पे देखिए और भी कम दिया था, बैक स्लैश और एक कॉमा लगाया था, ठीक है। तो इसी हिसाब से यहाँ पे फाइन, ओके। अच्छा, अब इसमें राइट एरो लेफ्ट एरो ये भी होता है, तो मान लीजिए हमें कुछ लिखना है, लेट अस गो इनटू न्यू लाइन,
suppose I have to write, suppose x implies b, that x implies b, so we can write x write a double r o, ठीक है ना. तो यहाँ पे राइट एरो, सो राइट एरो में आर कैपिटल होगा तो ये बड़ा सा आपका प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना. ये से सिंबल प्रोड्यूस करेगा, ये वाला देखिए, ठीक है ना. और अगर आर जो ही स्मॉल कर दिया आपने तो सिंगल ऐसे लाइन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है. सो दोनों आप देख सकते हैं इसी को. Just is hanging. Okay. Thing is that we need to simply run see from there a command, and then we can type here and then we can run. Okay. So okay, so output is coming. Let me compile once again, maybe due to network issue or what. The same thing can be also practiced on the software I suggested you. You can see X and right arrow Y. Okay, fine. So this is the symbol for implication or implies. Fine. So with this, okay, we have covered until now up to here. So we next long like function and all, and then integration on summation, everything can be we will discuss in the next class. So many things are there, and then we have arrays. Okay, and arrays and matrices and all, and delimiters are there. Fine. Okay, so multi-line formula. So one by one we will discuss in next few coming classes. Fine. So let us finish our discussion for today. Okay, and then we will meet you in the next class. सर ये डॉक्यूमेंट सेंड कर दीजिएगा. Okay. At last today is this I don't know, some problem is coming, system is not responding or what.